Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to discuss one very important application of greedy technique, that is job sequencing with deadline. So, already we have covered four applications of greedy technique, that is fractional knapsack. Then we covered the concept of Huffman coding, optimal merge pattern, and yesterday we talked about minimum cost spanning tree, under which we have covered two algorithms. One was the Kruskal algorithm and Prim's algorithm. आई होप कि आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में। आज से मास्टर क्लास में हम लोग ग्रीडी टेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज एप्लीकेशंस अलोंग विद द जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन and questions will be covered in the next 3 or 4 sessions under the master class. So आज वाले सेशन में हम एक ही एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, दैट इज जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन. So, as the name suggests that job sequencing with deadline means sequence हम कब बनाते हैं जब एक से ज्यादा occurrences अवेलेबल होते हैं, एक से ज्यादा इंस्टांसेस अवेलेबल होते हैं, तब हमें सीक्वेंस बनाने की जरूरत होती है. बिकॉज इफ यू हैव ओनली वन जॉब तो या तो वो फुलफिल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, बट इन दैट केस विल नॉट बी रिटर्निंग अ सीक्वेंस. So whenever a sequence term is coming, that means you will be given with two or more than two objects, which you have to arrange according to some condition. Here the condition is according to the deadline. दिस इज जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कॉलेज में आपको 4 असाइनमेंट्स गिवन है और ऑब्वियसली बात है कि चारों की डेडलाइन अलग होगी. तो सबसे पहले हम किसे करना प्रेफर करेंगे? जिसकी डेडलाइन पहले है, जिसको की सबमिशन पहले है, देन द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज load is too much, you cannot work on all the assignments, you cannot work on all the projects. तो हमें डेडलाइन के ऊपर एंड प्लस प्रायोरिटी और कितनी ग्रेड्स या कितनी वेटेज है उस असाइनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हमें सबमिट उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ता है. दैट मीन्स द असाइनमेंट विच इज हैविंग द लेस वेटेज और लेस इंपॉर्टेंट वी कैन लीव इट, बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ टाइम कि हम सारी जॉब्स को कंप्लीट करें. सो सेम गोज हियर. जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन यानी कि हर जॉब के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ डेडलाइन गिवन होगी. अब एक और रियल लाइफ सिनेरियो कंसिडर करते हैं. लेट्स अज्यूम यू आर वर्किंग इन सम कंपनी और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट एट अ टाइम यू कैन वर्क ऑन ओनली वन प्रोजेक्ट. दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट. ऐसा नहीं है कि पैरेलली आप 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, दैट इज नॉट द सिनेरियो. एंड ईच प्रोजेक्ट रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. amount of time आप कुछ भी consider कर लो, that's up to you. It's just same time is required to fulfill to complete all the jobs. अब हमें क्या करना है? हर इंसान का प्रॉफिट क्या है? एवरीवन इज हर इंसान का गोल क्या है? To earn maximum profit. Similarly here, job sequencing with deadline में the goal of this application is to earn maximum profit. To earn maximum profit. अब यहाँ पे हम 3 चीजों की बात करें, जॉब की बात करें, जॉब्स गिवन होंगी, उनको आपको अरेंज करना है किस चीज को कंसिडर करके, डेडलाइन को कंसिडर करके, एंड द गोल इज द मैक्सिमम प्रॉफिट. दैट मीन्स इन द क्वेश्चन यू विल बी गिवन विद द नंबर ऑफ जॉब्स गिवन होंगी, प्रॉफिट गिवन होगा हर जॉब के करस्पॉन्डिंग, and corresponding to each and every job you will be given with the deadline. This means that, for example, we are given with 4 jobs. There are 4 jobs available, J1, J2, J3 and J4. Corresponding to each job, profit is given P1, P2, P3, P4 and that's it. Deadline is हर job की कुछ ना कुछ deadline होगी, D1, D2, D3. This deadline can be same. Okay, जरूरी नहीं है कि सबकी डेडलाइन डिफरेंट होगी, डेडलाइन कैन बी सेम. नाउ गोल इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. कॉन्स्ट्रेंट्स है, कॉन्स्ट्रेंट्स के एक टाइम पे एक ही जॉब पे काम कर सकते हो. किसी भी जॉब के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट तब मिलेगा जब जॉब कंप्लीट हो चुकी है. अगर आपने जॉब को बीच में छोड़ा है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट जॉब विल नॉट बी गेटिंग एनी प्रॉफिट. And another, the major constraint is
all the jobs cannot be completed within the deadline, क्योंकि जो deadline है that is less and the number of jobs are more. So here are the few constraints. Single processor is available. एक ही processor है, मतलब आप एक ही job पे काम कर सकते हो. The same at the same time, only one job can be done. Interleaving of job is not allowed. Job cannot be postponed. आप job को postpone नहीं कर सकते. Deadline will be fixed. Arrival time of all the jobs are same. That means you cannot select a job on the basis of first come first serve basis. Every job requires 1 unit of time. It can be the month, it can be a day, or it can be an year, anything. You will get profit, किसी भी job के corresponding profit का मिलेगा when you complete the job within the deadline. Okay. For understanding, easy understanding purpose, हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी job की deadline 1 है तो I'm assuming that we have to submit it by January. Okay. Let's assume हम मंथ का कैलेंडर, हम ईयर का कैलेंडर बना रहे. Assume today is 1st January. अब मुझे स्ट्रक्चरिंग करनी है पूरे ईयर की कि भाई कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी जॉब पे काम करना है. सो 1 is representing January, 2 is representing February. This is just our assumption. आप कुछ भी assume कर सकते हो. I'm repeating this point. Okay. So 3 is March, 4 is April, 5 is May, and so on, like this. अब मान लो अगर किसी जॉब की डेडलाइन February में है, if job 1 is having a deadline in the February, can you work on this job in the month of January? आप एडवांस में काम कर सकते हो. Understand this. If you have got this point, then this application is very easy for you. If the deadline of any job is in the month of February, can I work on that job in the month of January? Or can I submit this beforehand? एडवांस में काम कर सकते हैं. आपको कॉलेज से कोई असाइनमेंट मिली हुई है, डेडलाइन एक हफ्ते बाद की है, बट इस वीक में आपको टाइम मिला, आपने इसी वीक में खत्म कर दी. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. सो दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब्रुअरी यू कैन वर्क ऑन दिस जॉब. ऑल्दो डेडलाइन वाज फेब्रुअरी, बट स्टिल आई कैन वर्क ऑन दिस जॉब इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल. If the deadline is J2 and the deadline is February, अगर डेडलाइन February है, कैन आई वर्क ऑन दिस जॉब इन द मंथ ऑफ मार्च? मतलब डेडलाइन निकलने के बाद अगर काम कर रहे हैं, विल यू बी एबल टू सबमिट योर असाइनमेंट? नहीं, जब डेडलाइन निकल गई तो असाइनमेंट डेट निकल गई. वी कैनॉट वर्क in the month of March. This means that the jobs cannot be postponed, but it can be done beforehand. आप बाद में नहीं कर सकते हो, बट बिफोर हैंड आप डेफिनेटली जॉब को परफॉर्म कर सकते हो. So these are the only constraints. Major problem is we cannot work on all the jobs. So that's why we have to get a sequence of the jobs in such a way that we get the maximum profit. So this is the problem statement. I hope that this is clear to everyone. Now let's move to job sequencing with deadline. So here we are given with 4 jobs and deadline is 2. यानी कि submission कब है? February में है. इसकी submission January में है. Submission is in February. Submission is in January. Something like this. ये January, February जरूरी नहीं है कि आपको यही कंसिडर करना है. ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर किए. Now, when can we get the maximum profit? अभी मैं कोई algorithm में apply नहीं कर रही हूँ. What are the possibilities? A person might be working on only one job, J1, J2, only one job, J3, J4. A person might be working on more than one job. Maximum कितनी jobs पे काम कर सकते हैं? Assume करते हैं each job requires 1 month. हर एक job को complete करने के लिए, finish करने के लिए 1 महीने का time चाहिए. तो मैक्सिमम कितनी जॉब्स पे काम कर सकते हैं? 2 jobs. Now let's take the combinations of 2 jobs. We might be having J1, J2, J1, J3, J1, J4. मैं possible combinations लिख रही हूँ. I don't know whether these are the feasible solutions or not. Deadlines हम बाद में check करते हैं. J2, J1,
रिवर्स ऑर्डर भी देखेंगे बिकॉज J2 का मतलब है कि आप इसको मंथ जान में कंप्लीट कर रहे हो, 1 को फेब में ले रहे हो, J1 को जान में ले रहे हो और J2 को फेब में ले रहे हो. सो ऑब्वियसली विल टेक द रिवर्स ऑर्डर एज वेल. आई एम सो सॉरी. J2, J3, J2, J4. Similarly, we'll start from J2. Let me write here. J2, J1, J2 is over. J3, J1, J3, J2, J3, J4. Next is J4, J1, J4, J2, J4 and J3. Okay. Now let's consider the profit क्योंकि ultimate goal है profit लेना. First month में can I submit the job one? Deadline February है, मैं Jan में submit कर रही हूँ, so obviously we'll get the profit. So profit earned will be 150. Only one job is there. Jan में ही इसकी submission और Jan में ही हम submit कर रहे हैं, so 200, 300, 250. I'm considering the deadlines as well. तो ये चारों jobs ये possibility है. But is it returning the maximum profit? Is this the optimal solution? We need to find it out. Now it is saying that in the month of January, deadline February में, Jan में हमने J1 पे काम किया, J2 की deadline Jan में थी और हम Feb में submit कर रहे हैं. Is it possible? Deadline is 2, deadline is 1 and I'm submitting this in the second month. Is this possible? This is not possible. This is not a feasible solution. ऐसा नहीं कर सकते. Deadline is in February. Deadline is in February. Jan में submit किया, Feb में submit किया. This is possible. So if it is possible, profit will be assigned. That will be 150 and 300. Deadline 2 है तो 2 तो possible है. अब यहाँ पे deadline क्या चाहिए? 2 और greater than 2. और greater than 2 तो ही ये slot ले सकते हैं. But deadline is 1. So this is not a feasible solution. For next one, J2 deadline is 1. First instance में इसी को full submit कर रहे हैं. It will work. Second slot के लिए deadline क्या चाहिए? 2 or greater than 2. So check for the jobs. J1 is having the deadline 2 or greater than 2. Yes, so this is possible. Profit earned will be J2 का profit is 200, J1 का profit is 150. You can see here, this comes out to be 350. Okay. You can notice one thing here, जब हमने J1, J2 लिया था तो हमने ये बोला था कि ये sequence possible नहीं है. But when we are taking J2, J1, then we are saying that this sequence is possible. So that's why you have to get the sequence wisely because आप randomly कुछ भी jobs लोगे, it is not correct. Okay, अगर आपसे सीक्वेंस पूछा है तो आपको लेना पड़ेगा ऑर्डर. अगर आपसे सिंपली ये पूछा है कि भाई कौन सी जॉब्स हैं जिन पे वर्क नहीं हो पाएगा, you can return on that. Okay. J2, J3, J2 तो ठीक है. J3 की डेडलाइन 2 और greater than 2 है. Yes, so this is also a feasible solution. Profit earned will be 200 is the profit for J2 and J3 का profit is 300. So this is returning 500. J2 will work. J4 की deadline is 2 or greater than 2? No. So this is not feasible solution. Check for J3, J1. J3 की deadline 2 है, यानी कि J1 के लिए भी यहाँ पे भी आपको deadline 2 और greater than 2 चाहिए. जो भी second number पे आएगा उसकी deadline 2 और greater than 2. J1 की deadline 2 और greater than 2 है. Exactly. So we'll get the profit here as 300 plus 150, that comes out to be 450. J1, J2 की deadline 2 or greater than 2 है, this is not a feasible solution. 4 की deadline 2 or greater than 2 है, not a feasible solution. J4, deadline is 1, this will work. Check for deadline 2 और second slot पे simple सी चीज है, कोई भी scenario हमने लिए, second slot पे कौन सी job आएगी जिसकी deadline 2 या 2 से ज्यादा है, right? J1 की deadline 2 है, बिल्कुल
So a profit will be 250. This is the profit of J4. J1 का profit है 150. So total profit earned is 400. J2, deadline is 2 or greater than 2. This is not a feasible solution. Although if you have observed, okay, J4, J3 की deadline is also 2. So this will work. J4 का profit is 250. J3 का profit is 300. So profit earned is 550. So these are the possible sequences. 3 jobs ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि deadline 2 है. And each job requires 1 unit of time. Now, what will be the optimal solution? Optimal solution means maximum profit. What is the maximum profit that can be earned from the given scenario? That is 550. So this is the optimal solution. Now, if you observe, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Will identify that maximum how many jobs can be completed. कितनी jobs complete हो सकती हैं? It depends on the deadline. If the deadline is 2, I'm going to explain the algorithm which will be using in the questions. ये सिर्फ आपके understanding के लिए था. What is the feasible solution? What is the optimal solution? I hope this is clear. अब हम कुछ steps की बात करते हैं जो हम algorithm में follow करेंगे. सबसे पहली चीज, we have identified that although we were given with the 4 jobs, हमें 4 jobs given थी with the profits and the deadline, but maximum कितनी job submit कर सकते हैं? It depends on the maximum deadline. तो मैंने maximum deadline find की. I found the maximum deadline as 2. तो यहाँ से हमने identify किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही jobs complete हो सकती हैं. Right? Second point is this is 1 and this is 2. अब jobs को कौन सी साइड से fill करना शुरू करेंगे? We'll start filling these jobs from the position 2. क्योंकि अगर हम पोजीशन 2 पे देखते हैं तो कौन कौन सी जॉब्स आ सकती हैं? J1 आ सकते हैं क्योंकि J1 की डेडलाइन 2 है एंड J3 की डेडलाइन 2 है. So there are only 2 possibilities of filling the second slot. Okay, but if I talk about the first slot पे कोई भी जॉब आ सकती है जिसकी डेडलाइन 1 या 1 से ग्रेटर है. This means in order to fill the slot, we need a job with a deadline 1 or greater than 1. 1 or greater than 1. So कौन सी jobs हैं जिनकी deadline 1 or greater than 1 है? J1 की deadline is a 2. It is allowed. J2 deadline is 1. This is also allowed. J3 this is also allowed. J4 this is also allowed. In order to fill the slot 1, there are lot many options. अगर मान लो मैंने J1 या J3 पहले ही slot में ले लिया तो 2 पे हम consider कर ही नहीं पाएंगे. So since the number of options of filling the slot 2 is less, so that's why we'll filling the slots from the maximum deadline from the rightmost slot from the last slot. ये रीजन क्लियर है कि हम लास्ट स्लॉट से क्यों फिल करेंगे और ऑब्वियसली सिंस वी हैव टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट तो डेफिनेटली विल गो फॉर द प्रॉफिट वाइज. हम इन सारी जॉब्स को प्रॉफिट वाइज सॉर्ट कर देंगे. ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैनुअली तो सबको क्लियर है बट इज दिस पॉइंट क्लियर? गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? So if I apply this algorithm on the given question, इसी slide पे कर देती हूँ मैं इसे. Okay, for just 2 minutes I'm switching off the video. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या बोला है? According to algorithm, first of all, we'll sort all the jobs on the basis of the profit. So maximum profit is returned by the job 3, that is 300, and its deadline is 2. Then is with the job 4, profit is 250 and deadline is 1. Then is with the job 2, 200 and
Deadline is 1. Then is J1, 150 and 2. What I have done is I have sorted all the jobs, sort jobs on the basis of profit. प्रॉफिट के बेसिस पे मैंने सारी जॉब्स को सॉर्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. ओके, although this is just going to give you the hint, जितने भी हम questions करेंगे will be following this algorithm. So that is the first step for the algorithm. I'll be writing this again. Okay, after that कितनी jobs पे काम कर सकते हैं? For that we need to scan this to get the maximum profit. Maximum profit is 2, यानी कि 2 jobs पे काम कर सकते हैं. Now कहां से फिल करना शुरू करेंगे? विल स्टार्ट फिलिंग दी स्लॉट्स. इन स्लॉट्स को हम राइट मोस्ट पोजीशन से फिल करना शुरू करेंगे. स्कैन करो, क्या पहली जॉब जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है इसको हम स्लॉट 2 पे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज द डेडलाइन इज 2. सेकेंड स्लॉट में आ सकती है ये जॉब. सो दिस कम्स आउट टू बी J3. नाउ go to the next slot. We are moving right hand side. We are moving from right to left. हम स्लॉट्स को किस डायरेक्शन में फिल कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट J3 is over. Now it is having J4. Can we take this job? Deadline is 1 or greater than 1. Yes, its deadline is 1, so J4 will be taken. Finished. This sequence will be giving you the optimal solution, and this was the sequence that returned us the optimal solution. This is about job sequencing with deadline. These are the steps for the algorithm. I hope this is clear. You need not to worry about the content that I'm writing. Just focus on understanding the concepts. Rest everything will be shared with you in the Telegram group. Telegram group is Shefali ma'am Testbook. इस group का link आपको description box में भी given है. So just go to the description of the video जो अभी आप इस time पे देख रहे हो. Link is given. That is the third link in the description box. And apart from that, अगर आपकी कोई भी query है, कोई भी doubt है, कोई भी problem है, you can post that in the Telegram group. You can directly interact with me. You can participate in the quiz and the poll. Okay. All right. So I hope that now you guys are comfortable with the concept of job sequencing with deadline. Am I right? Guys, quickly give me the confirmation. If the concept is clear, then we'll be using the algorithm and we'll be finding out the maximum profit. Are you all comfortable? I haven't got any response, any message from your side. जब तक आप कंफर्मेशन नहीं दोगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं. ऑलराइट, ये पहला क्वेश्चन है, मैं करती हूँ. सिमिलर एक और क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद 5 जॉब्स. दिस विल बी डन बाय यू. So let me solve this. So the very first step is, step 1 में हमने क्या बोला है? Sort all the jobs on the basis of the profit. Sort all the jobs on the basis of profit. Profit के basis पे हम इन सारी jobs को sort करेंगे. So 6 jobs are there. Just check for the profit. Maximum profit कौन सी job दे रही है? This is J4 30. J4 30 and deadline is 2. The next one is with the profit 24. J1 is returning profit 24. Then is J3 returning profit 22 with the deadline 3. Next job is J2 returning profit 18 with the deadline 3. Next job is J5. Deadline is 12, 4, J6, 10 and 2. So I have sorted all the jobs on the basis of the profit. Now I'll find out the maximum deadline. Step 2. Maximum आप कितनी jobs पे काम कर सकते हैं? It depends on the maximum deadline given. So scan the array. Scan the given array to find maximum deadline.
What is the maximum deadline here? That is 5. This means that we can work on only 5 jobs. Maximum 5 jobs can be completed within the deadline. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. This is step 2. Next step is now start filling the slots starting from कहाँ से fill करना शुरू करेंगे? Right to left. Reason already we have discussed. जो भी jobs 1 पे आएंगी वो जिनकी भी deadline 2, 3, 4, 5 कुछ भी है वो सारी 1 पे आ सकती हैं. But 5 के लिए हमारे पास बहुत limited options है. If you see here 5 पे कौन सी job आएगी? Having deadline 5. Having deadline 5 or greater than 5. So can somebody tell me that what job will be taking in the slot 5 greater than 5? Now we'll be referring to the jobs on the basis of the profit. We'll be looking for the job with the maximum profit that can take the slot number 5. So we'll go to the array and we'll check the deadline. Deadline is 5 or greater than 5? No. We'll go to the next job. Deadline is 5 or greater than 5? Yes. So this means that J1 will be selected for the slot 5. This is done. Now we'll move to the next slot. Now we'll be again going to this array and we'll be asking that we'll be looking for a job with the maximum profit, but constraint ke deadline should be 4 or greater than 4. This job is already selected. Now we'll not be considering this again. Deadline is 4 or greater than 4? No. Check for the next one. Deadline is greater than 4 or not? Greater than 4? No. Deadline is 4 or greater than 4? No. Deadline is 4 or greater than 4? Yes. Deadline is 4. So J5 will be taken for this slot. I hope you all are getting this point. Job is selected. Now we have to fill the job for the next slot. So again we'll go to the array. We'll start from the beginning. Deadline is 3 or greater than 3? No. Go to the next one. Deadline is 3 or greater than 3? Yes. J3 will be taken. Easy? अगर ये समझ में आ गया फटाफट से बताओ J2 में क्या आएगा? What should I take in J2? Again we'll go to the array, beginning of the array. Deadline is 2 or greater than 2? Yes. I'll be taking J4. For slot 1, start from the beginning. Job is over, job is over, job is over. Can we take this job? Yes. So it will be J2. इनमें से कौन सी जॉब पे वर्क नहीं होगा? That is job 6. Okay. Job 6 is left out. इस पे काम नहीं करेंगे. अगर आपसे पूछा है कि कौन कौन सी jobs left out होगी तो in this case there will be only one job because deadline is 5, total job 6 है तो एक job छोड़नी पड़ेगी. कौन सी job छोड़ेंगे? J6. And other question that can be asked on the basis of this, it can be what is the maximum profit earned? तो जो जो jobs fulfill किए उन सबका profit ले लो. Maximum profit earned will be, take the sum of all these, 24. J1 इस job को छोड़कर J6 को छोड़कर बाकी सबका profit ले लो. 18 plus 22 plus 30 plus 12. So this comes out to be 40 and 70 and 36, 106. So this comes out to be 106. So for the given scenario, 106 will be the maximum profit. J6 will be left out. Will be left out. अगर आपसे sequence पूछते हैं कि optimal sequence कौन सा होगा jobs का, so sequence here is, it's in front of you. That's J2, J4, J3, J5 and J1. You know that how we got this sequence. Easy, comfortable? Yes? Guys, is this fine for you? I don't know why you guys are not responding. I'm not sure whether you are responding or not because I'm not getting any message. हो सकता है कि मेरे पास message नहीं आ रहे हो. I cannot see your comments.
In order to just check if it's working or not, please give me the confirmation. At least say hi, hello, yes, no, anything. Because I guess ये पहला सेशन है जिसमें कोई मैसेज अभी तक मुझे नहीं मिला है. Okay. Completely your choice. I'm assuming कि आपको समझ में आ गया. Job sequencing with deadline. Now here we are given with 5 jobs. You have 2 minutes to try this question. You know the steps. हमने कौन-कौन से steps follow किए. I want you to return the possible sequence of the jobs. मैं चाहती हूँ कि आप sequence of jobs return करो. Sequence of jobs. Maximum profit. Here maximum deadline is 4, jobs are 5, तो इसका मतलब एक job छोड़नी पड़ेगी. वो कौन सी job छोड़ोगे? You have to decide on that. Maximum profit earned. You know that the step 1 is to sort all the jobs in the ascending order. Sort all the jobs in ascending order of the profit. On the basis of profit. Step 2, take an array of size equal to maximum profit, and that start filling the jobs. Start selecting the jobs from right to left. रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सिंपली आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्विकली टेल मी दैट व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न्ड. इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, स्टेप्स पहली चीज मैंने लिखे हुए हैं, बाकी रिकॉल द प्रीवियस क्वेश्चन. So here we are given with 5 jobs. On the basis of the profit, we'll be arranging these jobs in the ascending order. So J5 is having the maximum profit. सबसे पहले J5 आएगा with the profit 80 and deadline is, I'm writing here the jobs, profit and deadline, considering the deadline. Now, next one is 20. This is for J2, 20 and 3. Next is for J3, 15 and 3. J1, 10 and 3. J4, 5 and 4. So I have sorted all the jobs on the basis of the profit. Now we'll look for the maximum deadline. Here the maximum deadline is 4. So I'll be taking an array of size 4. 1, 2, 3 and 4. This is 1, 2, 3 and 4. Next one is start selecting the jobs from right to left. Start selecting the jobs for the slots from right to left. Condition क्या होगी? Deadline जो है job की, deadline should be greater than
और इक्वल टू ith स्लॉट, जो भी स्लॉट आप कंसिडर कर रहे हो डेडलाइन उससे ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, दैट इज द कॉन्स्ट्रेंट. सो कंसिडर द फर्स्ट जॉब. ओके, राइट मोस्ट 4. तो चेक करेंगे डेडलाइन इज 4 और ग्रेटर देन 4. यस, सो विल बी टेकिंग हियर J5. J5 is selected. Next, 3 के लिए deadline should be 3 or greater than 3. Yes, so J2 will be taken. Next, 2. Deadline should be 2 or greater than 2. That's fine. So J3 will be taken. Deadline is 1 or greater than 1. So its deadline is 3. So this job can be taken J1. So J4 will not be executed. So J4 is left out. मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न, J4 का प्रॉफिट छोड़ के बाकी सबका सम ले लो. सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज, maximum profit from the given scenario that can be earned is, that's 10 plus 20 plus 15 plus 80. This comes out to be 125. It's 125. Sequence of jobs, it's J1, J3. I'm just noting down the sequence, J2 and J5. That's it. Finish. I hope that this algorithm is clear to everyone. That means we are done with the job sequencing with deadline, but we have to return the time complexity for this algorithm. So what I'll be doing is I'll be taking the jobs and I'll just take the deadline. So sort all the jobs in decreasing order. I'm so sorry. Sort all the jobs. सबसे पहली maximum लिए हमने in the decreasing order on the basis of the profit. Decreasing order on the basis of the profit. Sort करना है. That means it will be taking order of n log n. You know that why we are taking n log n, because previous sessions में बहुत बार हम discuss कर चुके हैं. Next one is find the maximum deadline in the given array of n deadline and take the same size array and start from right hand side of the array. तो maximum एक unsorted array है, उसमें आपको maximum value find करनी है. How much time is required? That's the linear time complexity for the linear search. Now for every slot we are going to apply the linear search. Basically हम क्या कर रहे हैं, हर slot के लिए हम beginning से start कर रहे हैं and we are finding for the right value. So this is going for each slot we are applying the linear search. तो अगर आपके पास n minus 1 slots है तो it will be n minus 1 into n, that comes out to be n square. So this step is going to take order of n square. फर्स्ट स्टेप में n log n चाहिए, सेकंड स्टेप में लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, थर्ड स्टेप में n स्क्वायर चाहिए. सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम कम्स आउट टू बी n square because this is the maximum function. So time complexity for job sequencing with deadline is order of n square. This is all about job sequencing with deadline. Anyone having any doubt? If no doubt is there, I'm going to give you one question. This was actually asked in the GATE exam. This is a previous year GATE question. You are given with 9 tasks and corresponding to each task, you are given with the profit and the deadline. Question, this was a common data question. Common data question means एक data given होगा और उसके basis पे 2 questions पूछे होंगे and the weightage of each question will be like 2 marks. तो बेसिकली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था. फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था क्या सारे टास्क कंप्लीट होंगे टू कवर द मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है कि कौन से टास्क को छोड़ना पड़ेगा, विच टास्क विल बी लेफ्ट आउट. दिस वॉज पार्ट 1 और सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था. Okay, same scenario. So if you have got the answer for the first question right, this was the linked question. अगर first question का आंसर सही है तो obvious सी बात है कि sum लेके you can return the maximum profit. Can you do that? So I'm giving you 2 minutes to cover the part 1. That means you have to identify, will be able to
complete all the jobs. Here the maximum deadline is 7 and the total jobs are 9. तो इसका मतलब सारे तो complete नहीं हो सकते, कोई दो jobs छूटेंगी. So A cannot be the answer. अब वो जो दो jobs छोड़नी है वो कौन सी jobs होंगी? This is what you have to identify. Okay? Steps algorithm के हम discuss कर चुके हैं. So just follow those steps. Guys, do you want to try this question? Otherwise, I'll solve it and you can see. But उसका कोई benefit नहीं होगा. If I'll be only solving the questions, तो it is just like कि मेरी practice चल रही है. उससे आप लोगों को benefit नहीं होगा. So I'm giving you time ताकि आप solve करो और अगर कोई doubt आता है तो immediately you can ask that. Because this session is the live session. तो live session का यही benefit होता है कि जहाँ पे doubt आए immediately आप पूछ पाओ. So step one is to arrange all the jobs in the decreasing order on the basis of the profit. So here we are given with the tasks, profit and deadline. Arrange them. Anyone got the answer? Last 30 seconds. 9 tasks given है सिर्फ और सिर्फ step 1 में आपको arrange करना है decreasing order में on the basis of the profit. If two jobs are having the same profit, then you can take any job on the first instance. क्योंकि एनी हाउ दोनों जॉब्स का प्रॉफिट सेम है. अगर डेडलाइन फुलफिल होती है तो कोई भी जॉब पे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, let me arrange these jobs in the order on the basis of the profit. So maximum profit is with T3, that's 30 and deadline is 5. Next one is with T9, 25 and 3. Then next is with T7, 23 and 2. Next is with T2, 20 and 2. Next one is T4, 18 and 3. Next is T5, 18 and 4. Next one is T8, profit is 16 and 7. Next one is T1, profit is 15 and 7. T6, profit is 10 and 5. We have taken all the 9 jobs? Yes. Now,
start filling the jobs. अब मैंने maximum deadline देखी, maximum deadline is 7, so I have taken an array of size 7. Right side से fill करना शुरू करेंगे. We'll look for the job with the deadline 7 or greater than 7. So what I'm doing is I'm performing the linear search to find a job with deadline 7 or greater than 7. I have got here. That means T8 will be taken. Next, search for a job with deadline 6 or greater than 6. Again, I am performing a linear search to find a job with deadline 6 or greater than 6. This is associated with T1. So we need to take here T1. Next, find out a job with deadline 5 or greater than 5. हमें first instance में मिल गई, that is T3. Next, find a job with deadline 4 or greater than 4. 4 or greater than 4. We are doing the linear search, so we have got here a job with the deadline 4. First instance where the deadline is 4 or greater than 4. Deadline is 3 or greater than 3, so T9 will be taken. Then deadline should be 2 or greater than 2, that is T7, so T7 will be taken. Next one is deadline should be 1 or greater than 1, so T2 will be taken. T2 will be taken. Now, if you observe here what all jobs are left out, it's not always the job with the minimum profit. Okay, तो 10 और 15 दो minimum values थी, तो सिर्फ इसके basis पे answer return नहीं होगा. You need to consider the deadline also. So here two jobs are left out. It's T4 and T6. These are not considered. So answer for the first part was answer D. सेकेंड केस में सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न, तो T4 और T6 को कंसिडर नहीं किया. T4 and T6 were left out. We have opted here. T4 and T6 are left out. तो मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या करना है, जस्ट टेक द सम. मैक्सिमम प्रॉफिट अर्नड, take the profit of job 1, that is 15 plus 20 plus 30 plus 18 plus 23 plus 16 plus 25. Just take the sum. Okay, so this comes out to be 33 and 83, 83 and 106, then comes out to be 106, 16, 12, 22 and 47. So it comes out to be 147. So the correct answer for this question is 147. So this type of question you can expect on the basis of job sequencing with deadline. So main thing is you should understand that how this algorithm is working, और mostly confusion होती है. हम algorithm तो रट लेते हैं कि right side से fill करना शुरू करना है, but मैंने proper reason दिए कि why we are starting from the right hand side. I hope this is clear to everyone. So this was the agenda for today's session to cover job sequencing with deadline. If you guys have any doubt or query, you can ask. Rest, don't worry about the notes, questions. I'll be posting that in the Telegram group. In another 5 minutes, you will get this PDF in the Telegram group. Telegram group name is Shefali Ma'am Testbook. You can search for it or you can join it through the link. Link is given in the description box. अगर कोई भी डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हो in another 5 minutes, जब तक मैं session end नहीं करती हूँ obviously. And apart from that, you can post your doubts or the queries in the Telegram group. You can directly interact with me. You can participate in the quiz and the poll. Let me quickly share my screen so that I can show you that where is that link available. Moreover, this way, if you want to cover all the concepts, then you can join the super coaching, in which we are covering a complete syllabus of the GATE in detail like this. Okay. So currently this is the video that you guys are following. So just go to show more. And if you see here, the first link is for the masterclass, जिसमें हम लोग previous year questions कर रहे हैं. आज वाले सेशन से हम ग्रीडी टेक्निक के क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू करेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए हुए हैं
वो है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, हफमैन कोडिंग। सो मेजरली एप्लीकेशंस हमने कवर कर ली है ग्रीडी टेक्निक की। ओनली वन इज लेफ्ट आउट, दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसमें हमें दो एल्गोरिथम्स डिस्कस करने हैं, डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम एंड बेलमैन फोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव कवर्ड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 सेशंस में हम लोग ग्रीडी टेक्निक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मास्टर क्लास का टाइम 8 पीएम है गाइस। यू कैन ज्वाइन द सेशन एट 8 पीएम। जस्ट हाफ एन आवर का सेशन है, 30 मिनट्स। So on an average from 3D technique will be able to solve 5 to 7 questions, depends on कि आपको कितना टाइम चाहिए एंड कितनी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स की। NIC Super Coaching, this is specifically for the students, those who are targeting on the NIC batch. But I'll recommend you to go for the GATE Super Coaching, because if you have prepared for the GATE, it will help you in your NIC exam and the ISRO, क्योंकि इस टाइम पे ISRO की vacancies भी out है, ISRO में भी help करेगा, GATE में तो करेगा ही, UGC NET, so lot many benefits are there. Anyhow, third link is for this Telegram group. तो आप इस लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर द सुपर कोचिंग का बेनिफिट ये, जितना भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस रिकॉर्डेड सेशंस में अवेलेबल है। आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेशंस को फॉलो कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अनदर important point here is you will be getting multiple sessions on one topic. कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका एक ही सेशन अवेलेबल है। n नंबर ऑफ सेशंस आर अवेलेबल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हो, तब तक देख सकते हो जब तक आपके पास टाइम और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। Okay, so I'm going directly to the full courses. So we have full courses by Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by me and my team by Testbook. So here you can see 250 videos are there. ये सारी की सारी videos gate specific है, पूरा का पूरा gate syllabus डिटेल में कवर हुआ है with enough number of examples. Apart from that, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो if I go to the study notes, here we have the PDF notes for the engineering mathematics, general aptitude, formula notes, and computer science engineering. If I'll be going to computer science engineering, here the core subjects of computer science and IT will be there. And अभी के लिए ये नोट लॉक है। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में 5 PDF नोट्स आर अवेलेबल। हर एक PDF मतलब एक चैप्टर। हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर हुए हैं, अलॉन्ग जैसे हम लोग क्लास में बताते हैं ना, बाय टेकिंग द एग्जांपल्स। सो दैट्स वे, इन द सेम वे दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस, ताकि आपका नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम ना जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द फॉर्मूला नोट्स एज वेल। ये आपको रिवीजन के टाइम पे काम देते हैं। तो जो फॉर्मूला नोट्स है, डिटेल नोट्स और फॉर्मूला नोट्स में इतना डिफरेंस है, हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल इन द डिटेल नोट्स। फॉर्मूला नोट्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा विदाउट एग्जाम्पल्स एंड द इम्पोर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से चाहिए। तो ये इसकी जरूरत आपको एग्जाम से पहले पड़ेगी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप खुद बनाओ, चाहे ये वाले फॉर्मूला नोट्स को यूज करो या इनमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करो, बट दीज विल रियल बी वेरी वेरी हेल्पफुल बिफोर द एग्जाम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर। तो topic wise test, subject wise test, full length test, mock test, everything will be included in the super coaching batch. If I go to the pricing, okay, you can go through the demo classes and you can have a look over live series. So abhi live sessions are not started yet, because this time pe it's the beginning, so people are watching the recorded sessions. So once you are done with one or two subjects, we'll start with the live series. So वो पूरा का पूरा structure live series के अंदर reflect होना शुरू हो जाएगा। Now, if we go to the pricing, we have four batches. Four plans are there: 9-month plan, 12-month plan, 24-month plan, and 3-year plan.
3-year plan is basically meant for the students, those who want to start with their preparation from the first year itself. Okay, इसमें आपको enough time मिल जाएगा, आप अपने semester के हिसाब से subjects उठा सकते हो, जो second third semester में subject है उसको उठाओ, subject की preparation भी हो जाएगी, gate level पे हो जाएगी, and detail में अगर आप thoroughly books को भी read करना चाहते हो, you will get enough time. See, जितना ज्यादा time होता है ना, आप उतने ज्यादा sources को explore कर सकते हो, जितना कम टाइम होगा उतना आप कम एक्सप्लोर कर पाओगे, बट इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक्स नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, कोई इशू नहीं है. इफ यू आर हैविंग द 9 month प्लान, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस एंड फॉलो द लाइव सेशंस जो अभी स्टार्ट हो जाएंगे. that will be more than sufficient, क्योंकि जो notes हैं, we have worked on those notes in such a way that we have referred to various books, और हर book से जो जो important points है, those are included in your study notes. 1 year plan and 2 year plan. You can see for 1 year plan it's 11,249. For 1 year plan it's 13,499. So this way these are the discounted prices. ये discounted price कब मिलेगी? जब आप coupon code use करोगे. What is the coupon code? That is Shefali S. आप यहाँ पे description में देख सकते हो. Coupon code is Shefali S. Just use this coupon code to get the maximum profit. Okay. So this is all from my side. Now, if you guys have any doubt, you can ask. Otherwise, let me discuss the schedule of the upcoming classes. You know that on the weekend we do not have the class. Okay, so in the next session that will be on Monday, we will be covering the concept of single source shortest path. In this, we will be discussing two algorithms: Dijkstra's algorithm and Bellman-Ford. If we talk about the schedule, then Monday to Friday, I'm taking a YouTube session and the master class. At 4 p.m., we have 1 hour session, 4 p.m. to 5 p.m. We have 1 hour session on YouTube in which I'm covering the concepts from various subjects. And at 8 p.m., 8 p.m. to 8:30 p.m., we have Testbook masterclass. Basically, it's a masterclass which will be conducted on the Testbook platform. But undoubtedly, you need not to pay anything for these classes. These are completely free. These are not covered under the subscription. No subscription is required for the master classes. Okay. So in the master classes, I'm covering the PYQs, previous year questions, किसके basis पे जो concept हम cover कर चुके हैं same week में. Okay. And Saturday and Sunday will be having 1 hour session on the YouTube session. Time will be 7 p.m. to 8 p.m. And in this session also will be covering the PYQs. अब दोनों में PYQs करेंगे, बिल्कुल PYQs करेंगे, but जो Monday to Friday कर रहे हैं वो GATE के previous year questions होंगे. Saturday and Sunday ISRO के होंगे. ISRO. So GATE aspirants can also join this session and ISRO students can join this session. Okay. So this is all from my side. I hope आप सबने जिन्होंने भी इसरो का फॉर्म फिल करना था फिल कर दिया, आप डेडलाइन जा चुकी है. Anyone having any doubt or query? This is all from my side. I'm done for the day. So tomorrow is Saturday. We won't be having the YouTube session or the master class. तो इसलिए मैंने बोला कि जो next application है greedy technique की, so single source shortest path, that will be covered on Monday. Tomorrow we'll be having a session at 7 p.m. on the previous year questions of ISRO. Okay. I guess there was no query. So this is all from my side. Thank you so much, guys. I'll see you at 8 p.m. in the masterclass in which we'll be discussing the previous year questions of the greedy technique.
Thank you so much. Hope the session was useful, and don't forget to like the video because it gives me a lot of motivation that you guys are liking the content and you want the similar videos. Okay. God bless you. Bye bye.